मठे दी चादर उत्थे सलेटी रंग माहिया आवो सामने कोलो दे रुस के नालंग माहिया मधानिया बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। मधानिया तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफुक, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीप की रात। तेरी आंखें हैं या सजदे में गमगीन नमाजी, तेरी आंखें तेरी ठहरी हुई गमगीन सी आंखें। तेरी आंखों से ही तख्लीक हुई है सच्ची, तेरी आंखों से ही तख्लीक हुई है ये हयात। We first met in Bombay and I did all the talking and she was really quiet, but like the swing was such that now she does all the talking and I do all the listening. And yeah, it's been almost 1 year that we've met and it's been quite a beautiful journey, and I believe that we as companions will have a beautiful journey ahead as well. I still remember that the first time we had dinner at her place, which was downstairs of building, and there was a little pup that came up to her, and that is when I first realized that she loves dogs. And although she's insistent on we having dogs in our home, but that's never gonna happen, Mauritia, let me tell you that. लावा इश्के दे अंबरी उडारियां सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां हो लावा इश्के दे अंबरी उडारियां मैं
ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਲੱਖਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਆ ਰਾਤੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਠੱਗਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਗਿਆ ਪੈਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ First met in Mumbai, and I just got transferred to Mumbai, and that was just instant. Though I did not expect that. He was first one whom I had ever met, and I never met any other boy, and never spoke to anybody else on call. So I was very conscious when I first met him. And eventually things worked out. He is very caring, so he'll call out his friends and he'll send gifts for me, and that was very surprising for me at times. I never expected that from him, and at the same time he's very caring, and he's very positive. So the things I lack, Ruchir completes me,